Now the question number 8 is, prove that a quadrilateral is a parallelogram if it's one pair of opposite sides are equal and parallel. If a pair of opposite sides is equal and parallel, then that quadrilateral is a parallelogram. ये हमें प्रूव करना है. So the solution is, it is given that हमें क्या प्रूव करना है? एक quadrilateral parallelogram होगा, if it's one pair of opposite sides are equal and parallel. If a pair of opposite sides is equal and parallel, तब वो parallelogram होगा. It means given a quadrilateral, या फिर आप ऐसा स्टार्ट कर सकते हो. It is given that ABCD is a quadrilateral. ABCD is a quadrilateral in which one pair of opposite sides is equal and parallel. A, B, C and D. ABCD is a quadrilateral in which AB is equals to one pair of opposite sides. AB is equals to CD. AB is equals to CD and AB is parallel to CD. AB is equals to CD and AB is parallel to CD. One pair of opposite sides is equal and parallel. तो मुझे ये प्रूव करना है कि वो एक पैरेललोग्राम है. तो मुझे प्रूव करना है, I am supposed to prove that the quadrilateral ABCD is a parallelogram. वो एक पैरेललोग्राम है करके प्रूव करना है. Now here construction is, join AC. AC को आप ज्वाइन कर दो. AB is equals to CD and AB is parallel to CD. आपको प्रूव करना है कि if one pair of opposite sides are equal and parallel, then that is a parallelogram. Quadrilateral ABCD is a parallelogram है करके मुझे प्रूव करना है ना. तो आपने क्या किया? AC को ज्वाइन किया है. Now the proof is, in triangles BAC, मैं उसे हाईलाइट में यहां करूंगा. BAC is this. BAC and BAC and DCA D, C and A.
BAC and BAC and DCA. In triangles BAC and DCA, DCA is this triangle, BAC is this. BA is equals to DC, BA is equals to DC, that is given. BA is equals to DC, isn't it? BA is equals to DC is given. ये तो क्वेश्चन में दिया है. अगर ये एंगल 1 है, अगर ये एंगल 2 है, एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल्स होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर. मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ए बी इज पैरेलल टू, ऐसा दिया है ना, ए बी सी डी. ए बी इज पैरेलल टू सी डी दिया है, ये दोनों पैरेलल हैं, दिस इज ट्रांसवर्सल. तो ये एंगल 1 और एंगल 2 कौन से एंगल्स होंगे? ये दोनों पैरेलल हैं. 1 और 2 कौन से एंगल्स होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. सो एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, that is alternate interior angles. Alternate interior angles. Angle 1 equals to angle 2, isn't it? Now उसके बाद angle 1 और angle 2 equal है, alternate interior angles हुआ है. Now AC is equals to CA. AC is equals to, इस ब्लू ट्राइंगल का AC, इस रेड ट्राइंगल का CA कॉमन साइड है. सो AC is equals to CA. This is common side. So what is that? अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो BA is equals to DC. BA is equals to DC. Angle 1 equals to angle 2. AC is equals to CA. So S, ये S, S, ये S, S, ये S, S, ये S. This triangle and this triangle are congruent. So therefore, triangle BAC is congruent to triangle DCA by S, ये S, isn't it? S, ये S, S, ये S by S, ये S, congruent criterion. BAC, DCA are congruent. तो इस ब्लू ट्राइंगल का थर्ड एंगल क्या है? ब्लू ट्राइंगल का थर्ड एंगल BAC का, ये वाला है ना, BAC का ये एंगल 3 है मान लो. BAC का ये एंगल 3 है, ये वाला इस ट्राइंगल का. CAD का ये एंगल 4 है मान लो. ये एंगल 3, एंगल 4. अभी आपने प्रूव किया कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है. कौन कौन से ट्राइंगल्स? देखो, BAC, CAD. BAC is congruent to CAD. इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 4 कौन से एंगल्स होंगे? What is that? Corresponding angles होंगे, isn't it? BAC का थर्ड एंगल, लास्ट एंगल, CAD का थर्ड एंगल ये वाला है. So angle 3 is equals to angle 4. Angle 3 is equals to angle 4. This is by corresponding parts of congruent triangles, isn't it? 3 और 4 equal हैं by CPCT, but angle 3 comma angle 4 are alternate interior angles. कौन सा एंगल से? अल्टरनेट. कैसे अल्टरनेट है? यहां देखो फिगर में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. ऐसा है ना फिगर, A, B, C and D. This is angle 3, this is angle 4. एक काम करो, इसे मिटा दो,
इसे मिटा दोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो ये दोनों दो लाइंस हुए हैं, BC और AD दो लाइंस है, ये ट्रांसवर्सल है, तो 3 और 4 कौन से एंगल से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। सो 3 और 4 इक्वल है, लेकिन 3 और 4 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। तो इसका मतलब है इफ ए पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, द लाइंस आर पैरेलल, सो देयरफॉर AD is parallel to BC। आपने ये प्रूव कर दिया है AD is parallel to BC, ये दोनों पैरेलल है करके प्रूव कर दिया आपने, यही है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में क्या दिया है? ये भी इज पैरेलल टू, दीज टू आर पैरेलल, क्वेश्चन में दिया है। सो ये दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है। आपने प्रूव किया ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, क्वेश्चन में दिया है। आपने प्रूव किया ये दोनों पैरेलल है। सो इसका मतलब क्या हुआ है? देयरफॉर AB इज पैरेलल टू CD, AB इज पैरेलल टू CD, एंड ये क्वेश्चन में दिया है। देखो क्वेश्चन में आपने क्या प्रूव किया? दिस इज AD is parallel to BC. AD is parallel to BC. Since each pair of opposite sides, is parallel, so therefore the quadrilateral ABCD must be is a parallelogram. Okay.